Hello students, welcome to Apple and Career Institute. Today we'll discuss about some of the economic indicators which were released in this month. The first is wholesale price index of February 2024 and the YOY growth was 0.240%. The consumer price index was also released for Feb 2024. The figure stands at the YOY growth stands at 5.09%. And the index of industrial production which was released for the month of January 24, it stands at 3.8%. Besides, the GDP for October December quarter 3 was released and it stands at the YOY growth is at 8.4%. WPI के बारे में हम जानते हैं. It is released by the Office of Economic Advisory, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce between the 12th and 14th of each month. It is normally released with a lag of 1 month. For example, you're getting the figure of Feb in March. And website to access the data is this. WPI के बारे में होलसेल मार्केट में जो प्राइस होता है दैट इज़ योर WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड बेसिकली द वेटेज इज़ प्राइमरी आर्टिकल का वेट इसमें होता है 22.62%, फ्यूल एंड पावर का 13.15% एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैव अ वेटेज ऑफ 64.23%. सो द हाइएस्ट वेटेज इज दैट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट. The figure for Fab stands at 0.20%. All commodities का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है दैट स्टूड एट 0.20%, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है प्राइमरी आर्टिकल्स, जिसमें फूड आपके आता है, फूड आर्टिकल्स आते हैं. सो बेसिकली योर फूड आर्टिकल्स इज कंट्रीब्यूटिंग टू योर होलसेल टू एन इंक्रीज इन योर होलसेल प्राइस इंडेक्स. और अक्टूबर 23 में ये देखिए ये फिगर थी -0.26%. मतलब हम लोग अक्टूबर 23 में डिफ्लेशनरी जोन में आ गए थे. हाउएवर इट हैज़ स्टार्टेड इंक्रीजिंग अगेन एंड इट Feb 24 इट स्टैंड्स एट 0.20%. प्राइमरी आर्टिकल्स में इंक्रीज़ हुए हैं मंथ ऑन मंथ 3.84 से 4.49, वाइल योर फ्यूल एंड पावर इट हैज़ गॉन इनटू डिफ्लेशनरी जोन. मैन्युफैक्चर्ड इज़ ऑल्सो negative, it has done more negative. So basically जो आपका फूड प्राइस है that is contributing to your wholesale price index. ये हाईलाइट्स है, ब्रीफ हाईलाइट्स है, इसमें देख लीजिए. इट Feb 24 की फिगर स्टूड एट 0.20% और ये -0.26% जो हमारी अक्टूबर की थी उससे लोएस्ट है. उसके बाद सबसे लोएस्ट 4 मंथ्स में लोएस्ट है. एंड इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहा है? प्राइमरी आर्टिकल्स जो फूड आर्टिकल्स है उसका इन्फ्लेशन बेसिकली पड़ा है. मैन्युफैक्चरिंग का डिक्लाइन हुआ है, फ्यूल एंड पावर का भी डिक्लाइन हुआ है. हाउएवर जो आगे गोइंग फॉरवर्ड व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर गोइंग टू इफेक्ट योर होलसेल प्राइस इंडेक्स आर एल नीनो कंडीशंस आपकी वॉर्न आउट हो जाएंगी तो डेफिनेटली मानसून्स रेगुलराइज हो जाएंगे. सो दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर फूड इन्फ्लेशन पॉजिटिवली. एंड रबी सोइंग सीज़न अच्छा है तो देयरफॉर फूड इन्फ्लेशन विल बी लेस. हाउएवर ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी म्यूटेड बिकॉज चाइनीज़ इकोनॉमी का स्लो डाउन है दैट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस. हाउएवर जो टेंशन वेस्ट एशिया में एंड स्पेशली रेड सी क्राइसिस के बाद जो टेंशंस मैन्युफैक्चरिंग की जो इंक्रीज़ हुई है, so going forward that will maybe increase your wholesale price index, so that has to be carefully monitored. The second index which was released was consumer price index. ये रिलीज़ करता है NSO, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स मॉस्पी रिलीज़ करता है इसको. और ये 2 कैटेगरीज के रिलीज़ होता है पॉपुलेशन ग्रुप वाइज, रूरल एंड अर्बन. और कंपोनेंट वाइज भी इसमें क्लासिफिकेशन आता है. रीजन वाइज जो इसका क्लासिफिकेशन है दैट स्टैंड्स एट Feb 24 की जो प्रोविजनल फिगर है दैट इज़ 5.09%. जनवरी 24 फिगर की वॉज रियलाइज दैट इज़ 5.10%. Feb 23 वॉज 6.44%. सो डेफिनेटली दिस इज़ अनदर गुड मंथ जिसमें हमारी Feb की जो फिगर है दैट इज़ गॉन डाउन. बट इसमें जो बेसिक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि बोथ ऑफ देम होलसेल प्राइस एंड कंज्यूमर प्राइस बोथ डिपेक्ट इन्फ्लेशन. हाउएवर why there is a wide
divergence between the two indicators. So basically the answer lies in their component wise classification. इसमें जो फूड एंड बेवरेजेस को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है 54%, जबकि उसमें मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा वेटेज दिया गया था. पैन, टबाको एंड इंटॉक्सिकेंट्स को 33.26 वेट दिया जाता है. क्लोथिंग एंड फुटवेयर को 7.36, फ्यूल एंड लाइट 7.94, मिसलेनियस आइटम 27.26, ये इसका वेटेज होता है. सो बेसिक आप जब वेटेज के बाद जब इन्फ्लेशनरी फिगर देखेंगे तो अगेन योर फूड एंड बेवरेजेस दैट इज कंस्टिट्यूटिंग दैट द इन्फ्लेशन ऑफ दैट कैटेगरी हैज़ इंक्रीज्ड is high at 7.676%. So that is why that is the sole reason your CPI inflation is higher than your WPI inflation. While and there is a large amount of gap between both the inflationary indexes. So these are the major highlights. CPI stood at 5.09%. and however जो RBI का हमारा रेंज है 2 to 6% के बीच में ही रहा है. So this is again this is good for the economy. And again जो मैंने आपको पहले बताया कि food inflation has increased, vegetable inflation has increased. However, another good news for the economy is your core inflation, that is excluding your food and fuel, has come down to 3.37%. And core inflation has remained स्टिकी इन द इंडियन इकॉनमी. मतलब नॉर्मली ये 4-5% के अराउंड हमेशा रहता है, बट सिंस नवंबर it is turning low and it has come down to 3.37%. So what will be the impact? This figure is going to give more room for RBI to reduce interest rates. Another index which was released was Index of Industrial Production. It is released on the 12th of every month. Again, it is released by the MyBOSP. इसमें 3 कंपोनेंट, इसके 2 तरीके आते हैं. ये एक तो सेक्टोरल वाइज आता है, एक यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन आता है. सेक्टोरल वाइज अगेन इफ वी सी माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी. मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज़्यादा वेट होता है 77.63%, माइनिंग इज़ 14.37%, इलेक्ट्रिसिटी 7.97%, 99%. सो मैन्युफैक्चरिंग इज़ बेसिकली stood at 5.4. Mining was 8.3, and electricity recorded a growth of 6.8%. So the total index was 5.9 for the April-January and 3.8 for January 24. यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो प्राइमरी गुड, कैपिटल गुड, intermediary good, infrastructure construction good, consumer durable and consumer non-durable. All these are components and all these are the YOY growth of each component. So IIP growth has declined from the last month. It has stood at 3.8% in January 24, and the basic reason was the slowdown in manufacturing sector. Manufacturing sector has slowed down. So that has caused your IIP to decline. Mining and electricity आपका comparatively better रहा है. However, manufacturing has slowed down, and this has caused your IIP to slow down to 3.8%. अब अगर सप्लाई साइड सेगमेंट की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एंड इंटरमीडिएट गुड्स are growing well. However, consumer non-durables that have recorded a negative growth rate. So again, consumer non-durables may be impacted by your rising inflationary figures. इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली कंज्यूमर्स ने इनका जो डिमांड है दैट हैज़ गॉट रिड्यूस्ड. सो दैट इज़ योर इम्पैक्टिंग योर IIP नंबर्स. और दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग पे इम्पैक्ट है वो अगेन ग्लोबल सप्लाई चेन से रिलेटेड है. जो हमारा रेड सी में क्राइसिस हो रहा है दैट इज़ इम्पैक्टिंग योर मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन एंड द मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, बिकॉज अगेन द exporters have to take a longer route and that is causing the cost to increase. Thank you. With this we come to the end of this document. You can get more insight about economic indicators and economy on this channel. So I was just please subscribe the channel and like the video. Thank you.